हरे कृष्णा। स्वागत है हमारे सभी मित्रों का, हमारे प्रिय दर्शकों का और सभी भक्तों का जो आज हमें अनेकानेक देशों से देख रहे हैं आपके पसंदीदा शो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में। दोस्तों, हम इस मुलाकात में कई ऐसी विभूतियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। एक भक्त जो होता है वह चंदन के भांति होता है, जो खुद तो भगवान की सेवा में घसा जाता है लेकिन दूसरों को सुगंध प्रदान करता है। तो ऐसे ही चंदन समान हमारे भक्त जो हैं, जिनको हम इस शो पर बुलाते हैं और उनके जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। भक्त का जीवन भगवान के प्रति और जीवन के सार के प्रति हमेशा ही रुचिकर रहता है, जो कि आध्यात्मिक है। भक्त सबके प्रति समान होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता। वह सभी जीवों को उपकार करने वाला होता है, शांत रहता है और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहता है। तो आज ऐसे ही एक भक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि इस्कॉन त्रिवेंद्रम मंदिर के अध्यक्ष है, भगवद गीता में जिन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट किया है और केरला में 500 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जिसके वो अभी संरक्षक है और सैकड़ों सप्ताह तक चलने वाला भागवत सप्ताह जो है वो चलाते हैं। जन्म टीवी पे पिछले 10 साल से भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं। कई हजार लाखों भक्तों को उन्होंने यात्रा पे लेके जाते हैं और कोविड पीरियड में कई हजार लाखों भक्तों को उन्होंने प्रचार किया। बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो देते हैं युवाओं में। और केरला में ही इस्कॉन त्रिवेंद्रम के साथ साथ में कई छोटे ऐसे संस्थान है जहां पर वे मंदिर, गौशाला, अस्पताल, चिकित्सालय इस प्रकार से चलाते हैं और बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले भक्त हैं। जो उनको जानते हैं वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये प्रभु भी हर किसी से प्रेम करते हैं, जैसे कि भगवान का एक गुण होता है। और इतने शांत स्वभाव के हैं कि इनके साथ में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति जो है वो शांति का अनुभव करता है अपने मन में। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष व्यक्तित्व हिज ग्रेस जगत साक्षी प्रभु जी का। हरे कृष्ण जगत साक्षी प्रभु। नमस्ते, नमस्कार, हरे कृष्ण रमेश जी। हरे कृष्णा। So we would like to welcome you from the team of Hare Krishna TV. Thank you for taking out your time and coming on this eve of Onam. So मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि प्रभु जी जो है ये केरला से है और केरला में आज और कल बहुत बड़ा उत्सव है ओणम का। तो हम सभी हमारे केरलाइट भाई बहनों को ओणम की भी शुभकामनाएं देते हैं। और प्रभु जी बहुत ही बिजी है, जैसा कि हम इस प्रोग्राम में आगे आपके साथ में प्रभु जी के साथ यात्रा करेंगे। तो हम बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो थोड़ा इंग्लिश में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभु जी केरल से है। केरल जिसको कहा जाता है कि भगवान का अपना देश है, वहां से प्रभु जी आए हैं हमारे पास में। सो हम थोड़ा थोड़ा उनसे इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे और थोड़ा बहुत मैं सारांश देते जाऊंगा। So thank you Prabhuji for joining us, and we are truly grateful to you for your time. Although we have been trying to have you on our show for a very long time, but I know you are very, very busy and you have been doing wonderful services to the humanity, to the society at large. So we are truly honored to have you. Yeah, it's my honor, Prabhuji. It's my honor. Thank you, Prabhu. So Prabhuji, as you know, this program is actually एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ. So we basically try to inform our audience about the journey of the person, you know, who's on our show. So we will start your journey, Prabhuji. So we would like to ask you that please tell our audience where were you born, how was your upbringing was done, and then slowly we will take the journey ahead. So please tell something about yourself, Prabhuji. First, my pranams to all the audience. Actually, my childhood was in Coimbatore, in Tamil Nadu, in industrial district. I am from a background where in our family there was no spiritual touch. They were living a very common, normal life.
somewhere around the age of 15, I got introduced to some Gita quiz. You know, they conducted a quiz program on Bhagavad Gita. Yes. So one of my friend got some prize, and they took us on a spiritual tour to ISKCON headquarters in Mayapur, West Bengal. Yeah, that was my first exposure. I'm actually going to. It's an amazing place. Yes. Everybody should visit. So at the age of 15, I went to Mayapur. Then slowly I started connecting myself to spiritual seekers and Gita classes, and gradually it created a very deep influence and impression on me, and that is what you see now. So it is like a last 35 years journey. This year I am turning 50, so exactly 35 years ka journey. That's so wonderful, Prabhuji. Thank you. So you came in Krishna consciousness at the age of 15. So that means probably you might be in class 10 at that time, or probably just so. How was your schooling, Prabhuji, and being in Coimbatore and like Tamil Nadu, Kerala? So how was your like friend circle? And when you actually came in Krishna consciousness at that early age of 15, where the basically kid is very very chanchala, and he just want to like explore. He's in his teens at that time. So how was your experience, if you can relate and tell our audience that at that time how was your friendship and other things. Yeah, my whole circle, like friends, family, none of them were spiritually oriented. We didn't had any religious connection. Okay. Mandir to only on holidays, on summer vacation we go to temple. Otherwise we don't even go to temple. So very strange. It was like no connection with religious activities. My friends were also like that. So when I got introduced to this Bhagavad Gita class, actually I joined the Bhagavad Gita class because they announced this prize of a spiritual tour to Mayapur, West Bengal. That attracted and we joined. Then slowly we started going for satsang. When I was at the age of 15, and when they were giving Bhagavad Gita classes, nothing actually entered my head. After that, in Mandir, they give a very wonderful prasad feast. That Yes. really attracted. Then after a couple of weeks, the sadhus told, okay, after program, you please clean the vessels. So that's something we were interested, and we were washing the vessels and all. Then all my dress will become dirty. Then I'll go home. Then mother will ask, what happened? Why are you so dirty? I said, I was washing vessels in the temple. Then mother said, if you want to wash vessel, I will give you so many vessels. That is how it started. It actually started because of prasad and things like that. And slowly, I found out these sadhus, Hare Krishna temple monks, sadhus, they had answers for every single question. Many questions what we ask in our life, we don't get answers, but I found they were answering, and slowly, gradually, my Yeah. faith started growing, and I would love to be always in their company and things like that, and slowly it changed. Thank you. Thank you, Prabhuji. So let me just very quickly summarize, for our Hindi speaking audience so that they understand. तो प्रभु जी ने बताया कि इनका जन्म जो था वो कोयम्बटूर में हुआ, तमिलनाडु में, और उनके परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो या जिसका किसी धार्मिक जो एक्टिविटी हमारी होती है उसके साथ में उनका कोई लेन देन हो। लेकिन और प्रभु जी की स्कूल में भी जो उनके मित्र थे वो भी सब उसी प्रकार के थे, तो बस खेलना कूदना और इस तरह से उन्हें अच्छा लगता था। और 15 वर्ष की आयु में फिर उन्हें एक भगवद गीता क्विज जो था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वहां उन्होंने बताया था कि इसकी प्राइज में मायापुर इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टूर उनको करने मिलेगा। तो उस प्राइज के लालच में उन्होंने वो क्विज किया और वहां गए, और वहां पे जाके जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। वहां पे उन्होंने भगवद गीता भी प्राप्त की,
और प्रभु जी बता रहे थे कि उनको साधु जो मंक्स होते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी जो इस्कॉन में होते हैं, वो बहुत अच्छे लगे उनको, क्योंकि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। तो उनको बहुत आश्चर्य लग रहा था। और प्रभु जी की जो उम्र थी वो 15 साल की थी, उसमें बहुत जिज्ञासा होती है, तो जिज्ञासा से बड़े प्रश्न पूछते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद उनको वहाँ खाने के लिए बहुत अच्छा प्रसाद मिलता था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस्कॉन के मंदिर में प्रसाद जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान ने उसका स्वाद लिया रहता है। इसके लिए प्रसाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और इस प्रकार से प्रभु जी वहां पर जुड़ गए, और वो उन्हें कुछ कहीं सेवा लगाने के लिए, कुछ बर्तन मांजने के लिए देते थे। और प्रभु जी बर्तन मांज के जब मंदिर से घर आते थे तो उनका कपड़ा जो था वो सब गंदा हो जाता था और भीग जाता था। तो उनकी माँ पूछती थी कि अरे ये क्या हो गया तुमको? तो कहते थे कि मैं बर्तन मांज के आया हूँ। तो माँ कहती थी कि अरे अगर बर्तन मांजना है तो मैं तुमको बहुत सारे बर्तन दे दूंगी, तुम बर्तन मांजो। So thank you, Prabhuji. So once you came into Krishna consciousness, and as you said that there was no connection as such, so religious connection, or maybe going to temple was just like on a weekend or just for leisure. So how did your family take it, and how did your friends also take it? When you actually became little serious in Krishna consciousness, what were their reaction? There was one particular incident that happened in my life. My father built a new shop. So we are from a remote area of Tamil Nadu. There's some community of people on the housewarming day, they kill a goat and they pour the blood in front of the building, some kind of. So I was slowly getting into bhakti and I have become a vegetarian, So I stopped eating non-veg for some 6 months, 1 year. Aisa. Then one day I went to my home, little late night. My new house, my father had built a new shop, and in front of the shop they have bought a goat and they have tied the goat. Then I asked my mother, what is this goat for? So my mother told, nothing, nothing, nothing. You don't ask those questions. You go and eat and sleep. She didn't answer me. My Koti Behan, she came running and said, Bhaiya, tomorrow they are going to cut this goat. So I was very upset. And in the night, I went and asked my father, why are you doing this? So my father said, this is all rituals we are supposed to follow. Otherwise gods will be angry. Then the local priest who came and he tried to advise me, no, these are all we are supposed to do, otherwise gods will be angry. I was so young and immature. I asked the pujari, if you want to cut a goat, you have 10 fingers, why don't you cut one finger and give it to God? So my father became very angry and he started shouting. I was also very young and immature at the age of 15. But then that made a turning point. I thought I should try to educate these people on these topics and all. Then I slowly became serious in bhakti and decided to dedicate my full life in this mission. Thank you, Prabhuji. Very profound indeed. So very quickly I'll just summarize. तो मैं सारांश कहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन प्रभु जी ने कहा कि एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटी जब उनके पिताजी ने एक नई दुकान खरीदी, उनका उद्घाटन करना था। तो वहां पे इस तरह का कस्टम ट्रेडिशन था कि बकरी को काटते थे और उसका जो खून होता था वो दुकान के सामने फैला देते थे ताकि उसमें जो है वो बरकत हो। तो एक दिन इन्होंने देखा कि इनकी जो दुकान थी उसके सामने बकरी बांधी हुई थी। तो इन्होंने अपने माँ से पूछा कि ये काय के लिए है? तो माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जानती थी, और उन्होंने कहा कि ऐसा प्रश्न मत पूछो। लेकिन छोटी बहन ने आके बता दिया कि कल इस बकरी की हत्या होने वाली है हमारे दुकान के उद्घाटन के वजह से। तो प्रभु जी को बहुत दिल में कचोट हुई और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। तो उन्होंने मना किया, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, ये हमारी परंपरा है, हमको इसका पालन करना पड़ेगा। फिर प्रभु जी जाके और पुजारी से कहे कि अरे आपको अगर कट करने का इतना ही शौक है तो आपके 10 उंगलियां हैं, उसमें से एक उंगली काट के दे दो। और पुजारी बहुत गुस्सा हो गए, कह के कैसा प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन वह एक घटना थी जो इनके जीवन में पूरा परिवर्तन ला दी, और इनको लगा कि ये लोग ये कार्य कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे कि क्यों कर रहे हैं। तो इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और वह एक घटना जो थी, जिन्होंने प्रभु जी के जीवन के अंदर बहुत बड़ा कार्य किया,
और उनको लगा कि अभी जो है मैं इनको आध्यात्म का ज्ञान दूंगा ताकि ये कोई भी कार्य जो है वो बिना सोचे समझे ना करे। और अभी हम देखते हैं कि प्रभु जी ये जो कार्य है वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ना केवल अपने परिवार को लेकिन सारे लोगों को वो कार्य कर रहे हैं। सो प्रभु जी, नाउ वी आर सीइंग दैट वन इंसिडेंट व्हिच एक्चुअली turned your life and you decided to give knowledge at the age of 15, which is actually a very tender age. Sometimes a person even doesn't know himself many things, but still I believe that you knew that whatever they were doing is actually not correct, because cutting a goat was something which was really we can call heinous act actually. So then at that age, how did you started your preaching activity, and how did you convince your family members? And I know Kerala is actually not an easy country to preach, so how the preaching activity started, and how did you manage to convince people that they need to actually understand the spiritual knowledge? Initially, from my family and from friends, there was a very severe protest. They Yes. could not accept that somebody is going and taking up this life. Initially, there was a protest, and they were little angry with me, not talking to me and all. But I continued to do this job. So first step, what I did was I learned Bhagavad Gita from some very good teachers. It was God's blessings. I got some very good teachers. So they taught Bhagavad Gita and all. And within 1 year, 1.5 years, by the age of 18, I started giving small discourses, traveling to temples and conducting programs, traveling to small schools and conducting programs. So gradually it started, and people started appreciating, that especially when we started speaking in their own language and a Mhm. person from their own family background. So they started receiving it positively, and people were appreciating, and some of my friends and relatives who listened to me changed their life. They went and told the parents, no, he's doing a good job. So slowly parents also sobered down a little bit. And I will tell you a very interesting incident. My father never used to talk to me. Then in when Jagannath ji ka mandir inauguration was there, so at that time, the late Prime Minister Shriman Atal Bihari Vajpayee ji came for inauguration, and in the some photograph, I am standing next to him with Param Puja Gurudev and senior devotees. In one picture, it came, and that photo got published in the newspaper the next day. So overnight, my father changed. My father became very happy, calling all the relatives and friends and telling, "This is my son. This is my son." Then he started chanting, practicing. He started becoming vegetarian and started appreciating things. Very nice. But Prabhuji, at the age of 15, you started, and then you said that by the age of 18, you were giving class. So you are very Yes. fortunate, obviously, to learn Bhagavad Gita at that age. So when you were learning Bhagavad Gita that deeply, could you complete your education, or what happened, Prabhuji? Meaning, did you pursue your education completed? Otherwise, what happens? The society, people, our relatives, parents, they say that no. Once a person actually goes into spirituality and bhakti, then he actually leaves everything. So meaning, what happened? Could you complete the education? Yeah. We have a very, as I told, our family was different from what the modern people think. When I finished my 12th standard, something like 17 years old, my father said, "No more education." Okay. क्योंकि हमारा वो जो community Dukan. में, हाँ. yeah, nobody studies after 10th standard. I was the most educated boy because I completed 12th standard. And Very nice. I don't know, I was good in studies. I got 99% in maths and physics and all these things. Still, my father said no more education. So I didn't go to college. I joined the college, and within 2 weeks, my father was pushing, and I discontinued my education. So even though I wanted to study, they didn't allow. But then I was into dukan and all this, trading and everything.
Then I started, studying all Bhagavad Gita and things like that. Perfect. Then later on, one of my friend, a Buddhist monk friend, he told there are some universities in Sri Lanka which promotes religious and spiritual topics. So they give honorary certificates. You don't have to do preliminary education. Then I went to Sri Lanka. I got connected to that university. Then I said, I am already in this field for 10 years in Bhagavad Gita. So they asked to present a thesis on Bhagavad Gita. Then they reviewed it and they awarded honorary doctorate in Bhagavad Gita. Very nice. So somehow this facility is not much in India, but in some other countries these facilities are there. Wonderful, wonderful. I'm sure, Prabhuji, if your father obviously sees that PhD degree and also obviously Dr. Jagat Sakshi Prabhu, he is so happy. I know that although so it was actually really something which is very different, because every parent, they force their child to study so much, and they do every kind of possibility what they could do. So तो दर्शकों में बताना चाहता हूं कि प्रभु जी को जैसे मैंने पूछा था कि 15 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था और कहा कि उनको बहुत अच्छे अध्यापक मिले थे जो उनको भगवद गीता सिखा सकते थे, और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने छोटे छोटे स्कूल में और छोटी छोटी जगहों पर जाकर प्रवचन देना भी शुरू कर दिया था। और जब लोगों ने देखा कि वो अपनी खुद की भाषा में उनको समझा रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ वैसे उनके रिलेटिव्स ने जाके उनके माता पिता से कहा कि अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और पिताजी नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा वो पढ़ाई करे। हालांकि प्रभु जी का 99% आता था, जैसे उन्होंने बताया, मैथ्स में, फिजिक्स में वगैरह, लेकिन फिर भी उनकी दुकान थी तो वो कहते थे कि आप बस बैठ के पढ़ो। और फिर प्रभु जी ने बाद में और आगे जब यहाँ पर 10 साल की अपने आध्यात्म जीवन के बाद में उनको पता चला कि श्रीलंका में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑनररी डॉक्टरेट देती है, तो प्रभु जी ने भगवद गीता के अंदर ही थीसिस लिख के उनको सबमिट की और वहां पर पढ़ के और उनको बहुत अच्छी डिग्री मिली। तो उनके पिताजी, मैं कह रहा था कि बहुत प्रसन्न होंगे। तो उनके पिताजी प्रभु जी से बात नहीं किया करते थे और उनको शायद उन पे गुस्सा रहता होगा, लेकिन जब एक बार उनके वहां पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और वो फंक्शन में प्रभु जी भी वहां थे और उनके साथ में कोई उनका एक फोटो क्लिक हो गया जो कि न्यूज़पेपर में जाके पब्लिश हो गया, तो उनके पिताजी जाके सबको बता रहे थे कि देखो मेरे बेटे ने कितना बड़ा काम किया है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका पिक्चर आया है। तो ऐसे खुश हो गए थे। So thank you, Prabhuji. It's very, very interesting that how you actually took up to Krishna consciousness at that tender age. And now, meaning we understand that, your preaching gamut is so happening. But I just have one curiosity and one question, Prabhuji, that Kerala, as we know, where you are currently based out of and also preaching there, Kerala in one sense is God's own country, and the education level in Kerala is, I think, more than 96%. It is almost 100%. In each and every village of Kerala, there is a hospital, there is schools. Even the women crowd of Kerala is very, very highly educated, and everything is like, perfect. You can see from the materialistic point of view. But at other level, Kerala being a communist country, and also meaning the, I think the highest consumptions of liquor is actually in Kerala. I was surprised to know. I thought always that Punjab is on number one, but Kerala is actually on number one in consuming the liquor, as well as there is a rampant uh, meat eating which happens. So in this situation, how easy or how difficult it was for you to preach the science of Krishna consciousness to educated people of Kerala? That's a very good question, Ramesh ji. It was actually easy as well as tough also, because Kerala was under communist rule. Is under communist rule for the last 70 years. 70 So years. 70 years. Every single Keralite, including me, has a tinge of communism within us, because that's what been there and we have lived, and things are not very easy. As you rightly said, the education was almost 100%. Because of that, the suicide rate is highest in Kerala than any other state. Suicide rate, alcohol consuming rate, and the meat eating rate,
all these things are very high. So one side it is more educated, at the same time all these anarchies are on a very high level. So because of that, people are very educated, but somewhere deep within themselves, they all have a vacuum. People have developed a kind of dissatisfaction within themselves. So slowly I learned that in front of a huge shell, inside they are very hollow. Yeah. So slowly we started filling that hollow with a spiritual touch. Then people are opening up. They were looking for something like this. Then they started relating and they started appreciating and things like that. So even recently, there was a call from the cancer hospital. They requested us, we are treating them physically, but people are very, very unhappy. Why don't you come every week? 1 hour you talk to all the patients and make them satisfied. So the doctor said, we will treat them physically, you treat them mentally. So this is one way we could touch them and they're very satisfied and people started accepting. थैंक यू सो मच प्रभु जी. सो वेरी वेरी क्विकली, सो जैसा मैंने प्रभु जी से कहा कि केरला जो है एक तरह से भगवान का अपना देश माना जाता है. साक्षरता जो है लगभग 100% साक्षरता है, लोग पढ़े लिखे हैं. हर एक गांव में एक अस्पताल और एक स्कूल है. वहां पर महिला जो उनकी है वो भी बहुत सशक्त है, बहुत पढ़ी लिखी है और सब कुछ अच्छा है. लेकिन दूसरे साइड में केरला में जो है कि बहुत शराब की बिक्री बहुत होती है, शराब बहुत पीते हैं. महिला पुरुष दोनों ही शराब पीते हैं, ऐसे डेटा है. और बहुत बहुत सारा मांस भक्षण वगैरह सब होता है. तो कितना आसान या कितना मुश्किल था प्रभु जी के लिए भगवद गीता के इस ज्ञान का प्रचार करना. सो प्रभु जी ने बताया कि 70 साल से जो है केरला एक कम्युनिस्ट कंट्री रही है और हर केरलाइट में जो भी वहां से बिलोंग करते हैं उसमें टिंज ऑफ कम्युनिज्म जो है वो वहां पर रहता है. इसके लिए बहुत कई बार डिफिकल्ट होता है. तो साक्षरता भले ही बहुत है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वहां पे खुदकुशी लोग करते हैं. सुसाइड रेट जो है बहुत हाई है, लिकर कंजम्पशन रेट बहुत हाई है, मीट ईटिंग जो बहुत हाई है. सो अंदर से बहुत जो लोग हैं वो खोखले हैं. तो बाहर से बहुत संपन्न दिखाई देते हैं, बहुत ऐसे लगते हैं बहुत धनवान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक खालीपन उनमें रहता है. तो उसी का प्रभु जी ने एक फायदा उठा के और उनको ये आध्यात्म ज्ञान जो है वो देना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने उस खाली जगह में, शून्य में ये चीजें जो है वो एक्सेप्ट करनी शुरू की. और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैंसर अस्पताल ने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि हम कैंसर का ये पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो इतने प्रसन्न नहीं दिखते हैं, तो हम बाहरी रूप से उनके शरीर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उनकी मन और आत्मा का ट्रीटमेंट करो. तो रोज आके आप 1 घंटा उनको क्लास दिया करो. तो प्रभु जी जो है वो एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल में जाके प्रचार करते हैं. तो मेरा अगला प्रश्न अब उनसे यही है. So thank you Prabhuji, as you said, so it is very amazing to know that how people who can be very materialistically advanced from outside, but from within they are having this hollowness and they are always hankering for something. Some happiness is actually required, and we understand that the happiness cannot be with the things, but you get happiness only when you reciprocate with people, you have love, you have compassion in your heart, and you started actually giving the actual knowledge of Bhagavad Gita to people, and they started receiving it. And as you said about this cancer hospital, so I know that you are actually managing this, like cancer hospital, and there are many other activity also which is being done, that you also basically provide medical equipment and many other things. So how did this activities actually started, and are people accepting this as part of our missionary activity? Yeah. As per Mahabharat, we are supposed to do 3 dhana: Annadan, Ashrayadan, or Jnanadan. Then it becomes complete. Annadan is like a very short help. 4 घंटे का मदद है. Ashrayadan, you get him a job, get some health, then they will survive the whole life. Jnanadan, as per Mahabharat, will save a person from his entire life birth circle. So what we planned, we made some kind of a scheme.
and this cancer hospital is one of the best hospital in whole of Kerala. It is called Sri Chitra Regional Cancer Institute, very famous in Kerala, one of the best. So there people are in queue, for treatment. They get date only after 6 months and 8 months, and cancer is already killing that person. So if you go to that hospital, the situation and the scene is very, very painful. And only patients are allowed inside the hospital. And the hospital is little inside, and if they want to have food, they have to go like another 1 or 2 kilometers. So some of the doctors who are our friends, they suggested, why don't you give free lunch every day? Wow. So we started with 50 packets. Now we make around 300, 400 packets every day. Then we cook and pack, and we also offer this food to God. We sanctify this food to God, and our volunteers take there and distribute hot meals every day. So they supply this in the hospital. Then along with that, we try to communicate, give them knowledge and everything like that. Also, we have a small institute called Atma Plus. There we have all medical equipments, which people who can't afford to take rent. Suppose somebody is bedridden, we have oxygen concentrators, oxygen cylinders, wheelchairs, beds, and so many things. For poor patients, they can't take it on rent. They can't. So we give them free of rent. People use it for a couple of months, and when they are healthy, they give it back. So we also supply these kind of equipments, and we have some tie-ups. We help them like that. So we try to do a wholesome treatment for mind, body, and soul, like that. Thank you so much, Prabhuji. So it is indeed very, very wonderful to know, Prabhuji, because many times we have seen that some people they just accuse like ISKCON activity. They say that you guys are just dancing on the road and distributing books and not doing any work for the society. So it's very wonderful to know actually that so many activity which you are doing, and indeed I'm coming to some other activity which I'm made aware of. So I'll ask, but very very quickly I'll just quickly summarize for our audience. So प्रभु जी ने कहा कि अन्नदान होता है जो थोड़ी देर के लिए रहता है और बाद में वापस से आपको भूख लगती है, वो चला जाता है, तो दान के बारे में बता रहे थे। पर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा दान जो है वो ज्ञान का दान है, क्योंकि एक बार अगर आपको वो ज्ञान मिल गया है तो आप हमेशा के लिए सुखी रहते हैं। तो ये जो श्री चित्रा रीजनल कैंसर हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है केरला में। तो यहाँ पर जाके प्रभु जी जो प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ पर केवल पेशेंट को अलाउड करते हैं, और ये बहुत दूर है, अगर किसी को खाना खाने भी जाना है तो बहुत दूर 1 घंटे तक जाना पड़ता है। तो उनके कुछ डॉक्टर फ्रेंड ने उनको बताया कि क्यों आप यहाँ पर प्रसाद की सुविधा नहीं करते हो। तो प्रभु जी ने वहां पर प्रसाद के पैकेट सप्लाई करने शुरू किए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो पैकेट है ये भगवान को भोग लगाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि इसको शुद्ध किया जाता है। भगवान को जब अर्पण करते हैं तो सैंक्टिफाइड फूड, और वो उनको देते हैं। तो पहले 50 पैकेट से शुरू किया, अभी 300-400 पैकेट दिन के देते हैं। और एक आत्मा प्लस करके प्रभु जी का एक और प्रोजेक्ट है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट, व्हील चेयर या फिर इस तरह की जो चीजें हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसको लेने के लिए, तो उनको वो रेंट पे देते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको देते हैं यूज करने के लिए, तो जिससे वो यूज कर लेते हैं। तो मैं प्रभु जी को कह रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रभु जी का जो प्रयास है वो कहते हैं कि होलसम ट्रीटमेंट। तो बेसिकली शरीर के लिए, मन के लिए, और पूरे हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो है एक बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी जो है एक प्रयास कर रहे हैं कि ताकि लोग प्रसन्न रहे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मैं बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इस्कॉन वाले केवल बस हरे रामा हरे कृष्णा जपते रहते हैं, रोड पे नाचते रहते हैं, या फिर पुस्तक वितरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं समाज के लिए जो हालांकि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभु जी और उनका जो ये प्रयास है त्रिवेंद्रम टेम्पल से और उनकी जो टीम है वो इसको कर रही है। तो एक और प्रश्न पे मैं आता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी थोड़े दिन पहले some time back we actually heard Prabhuji that there was a very big calamity which happened in Wayanad in Kerala, and where the whole village
actually wiped out because of this landslide and the heavy rain and all those things. And in this, it was very, very difficult. Indeed, our heart went for it, and we also tried to kind of help and contribute for this noble cause. But it was really a tough and very difficult time. So in this aspect, we just want you to actually narrate to our audience that how the situation was and how did ISKCON actually came forward and help people in this difficult time of life. That was a very, very painful story. In the dead of the night, there was heavy rain, and underneath the land slid over, and above there was flood. So around 4,000 people lost their houses, and some of the remnants of the house or that broken this thing, people could find it out around 7-8 kilometers further down. Around 600 people died, and 500 bodies retrieved. Even till date, 100 bodies were not retrieved. A man's whole dream, everything was washed away in the dead of the night. So many organizations went to help. ISKCON was like in one of the forefront. Immediately within a day, all our volunteers reached there. And at the bottom of the hill, they set up a kitchen in one of the temples. And nearly 20 volunteers, they were cooking day and night. So every day they were taking food packets and delivering it to the rescue workers, the volunteers, the victims, even army people and the police people. They were all there, and they were supplying not only food, we were supplying the rain boots, because this was all dump and so dirt. So they had to have rain boots, then water bottles, some snack packets. So we could do it for almost a month, around more than 50,000 food packets, which we could supply. Thank you so much, Roji. And I think this will be really, remembered by people and who has been affected, because the only person who has gone through that difficulty can actually understand and appreciate what it means actually to get help at that time. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो वायनाड में एक जो घटना घटी जो बहुत दुखद थी, एक बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, और प्रभु जी ऐसे बता रहे हैं कि एक साथ घनी रात में ऐसा हुआ कि नीचे से जमीन सरक गई और ऊपर से बहुत सारा जो है वो पानी बह रहा था, फ्लड आ गया था, और उसमें 4,000 से ज्यादा घर जो है वो बह के चले गए, और इतने दूर के उनके घरों की चीजें करीबन 7-8-9 किलोमीटर के दूर तक उनको दिखाई दी। 600 से ज्यादा लोग मर गए, 500 बॉडी रिकवर हुई, 100 तो अब तक नहीं हुई। और इतनी भयंकर इस घटना में ऐसे कहते हैं कि उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। एक रात से सुबह उन्होंने नहीं देखी, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने मदद के लिए सामने आई, पर क्योंकि केरला में हमारा ISKCON का ये सेंटर था, ये बहुत आगे आके और फ्रंट में आगे इन्होंने सेवा की। बहुत सारे 20 से ज्यादा वॉलंटियर थे, वो रोज वहां पर सेवा करते थे और उनको प्रसाद प्रदान करते थे। और केवल उन लोगों को नहीं जो अफेक्टेड है, जो वहां पर रेस्क्यू वर्कर थे, जो आर्मी थी, पुलिस थी, हर किसी की वो सेवा और मदद कर रहे थे। और केवल प्रसाद ही नहीं, रेन बूट और उसके साथ में दवाएं, स्नैक्स के पैकेट, वाटर बॉटल्स, ये सब भी प्रोवाइड करते थे। तो इतनी सारी जो सेवाएं उन्होंने की है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है जो ISKCON त्रिवेंद्रम ने वहां पे किया है। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर वहां पे जो केरला से है और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ISKCON त्रिवेंद्रम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी और उनकी टीम जो है वो बहुत सारा कार्य करते हैं। सो प्रभु, आई विल कम बैक टू little further, that I am aware that in the time of COVID, which was another catastrophe, which affected the whole world and shut down the world completely, but at that time I think what flourished the most was Krishna consciousness. And I've heard that round the clock you were actually connecting with people, giving the class, giving the knowledge of Bhagavad Gita, because people were actually locked inside. They couldn't come out, but at least the knowledge of Bhagavad Gita entered their house, entered their home, and entered their heart. So how did this transformation happen, and how did so many people, lakhs of people actually got connected? So we just want that the activity which happened, and obviously the outcome of it also we will discuss certainly, that all these people actually, and how could you reach out to so many lakhs of people who actually got connected to Krishna consciousness?
the COVID, because for all of us, as you rightly said, it's a new experience for all of us, first time in a lifetime. Yeah. So first day we were in COVID, we did not know what to do. We studied books, chanted, a lot of time was there. So we were just discussing and we thought we will start one online Bhagavad Gita class. So all the devotees, all the members jointly decided and we made a small poster and floated. We thought some 30-40 people will join. But by the end of the day, 600 people joined. And we were like very surprised. Then within a week, 5,000 people joined this Bhagavad Gita and online class. We were really surprised. So we did different multiple sessions every day. And I think in that month, thousands and thousands of people, then we really realized so many people in this world are seeking truth. Only Yes. thing is that they're just busy and they didn't have time to pay attention to it. So when we started giving answers, there are genuine seekers in this world. By the end of that 2-3 months COVID period, we could able to touch 20,000 people, 30,000 people, and people were easily becoming vegetarian and taking up spirituality, which would have never been happened in our regular days. So in one sense, as you rightly said, Corona had a good side also. Yes. That was very, very impressive at that time. Yeah. Wonderful to know, Prabhuji, that how actually you could connect to so many people, thousands and thousands of people, and they became vegetarian. They accepted Krishna consciousness in their life. Indeed, they started leading their life in a very positive way, because I know that out of many people, actually they got connected to you and they are coming on pilgrimage trip. So I just want to tell our audience that Prabhuji, out of 365 days of a year, almost like 300 days, he is actually on pilgrimage, taking people around the world and taking to different spiritual holy places. So we would like to know, Prabhuji, more about it, that how did this spiritual trips happen, because I know that people from across the globe, not only India but from Gulf countries and many other places, actually, be it America or Europe, many devotees are actually joining your spiritual tour, which is also very, very spiritually enlivening. And as you said, it is very refreshing. It is actually good for the body, for mind, and for the heart. It gives a wonderful break. And also people learn about the spirituality. And not only that, you have actually taken them to Sri Lanka and many other places, Nepal and many other countries also. So we would like to tell you can tell our audience about the experiences, and how, if somebody wants to also become part of the spiritual tour, how they can become. Yeah. After this Corona, I said like thousands and thousands of people joined. Then once when the Corona got over, we were wondering, we have never seen these people face to face. They are in some corner of the world, you know. Sometimes we might have seen them in the internet, but that doesn't make a much of connection. So now Yes. they have received what to do. So then we announced, okay, we are going to take people for Vrindavan for the first time. Again, we were surprised. 1,000 people registered. We Wow. didn't had the mechanism. We are like 4-5 members, and how to take 1,000 people. So we have to develop a mechanism when we divided. Then they will come with us for a spiritual yatra, and 5 days they are with us physically. So that's the Yes. time we exchange our thoughts, we share our ideas, we inspire them to become vegetarian and chanting. And we could see this is a tremendous influence. Not only that, every holy place in India is a Pandora of treasure by itself. It's a treasure box. Every holy place. There are so many hidden, touching stories, Leela hai, and miracles hai, which people don't know. They just go to the holy place, go and see, eat something, and they come back. But when they know there is a miracle here, there is a Leela here, and they could able to connect it. Some of them said, I am from Delhi. I have been to Vrindavan 20 times, but I never knew Vrindavan was like this, because they hear this is what happened and this is true, this is the history, and people could relate it. And we could see
people transform in a very fast pace like that. Very nice, Roji. Very, very amazing to hear. And actually, it gives so much of joy, in my heart to hear that those people who were actually not having any time, COVID gave them some time, and fortunately, they turned towards God, got connected to devotees, and then obviously, then later in after COVID, they got connected physically, and taking to the dham. Dham has its own potency. So you are what you associate with, you are what you eat, as it's very famously known in English. तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी को मैंने पूछा था प्रश्न कि कोविड में आपने बहुत प्रचार किया और हजारों लोगों से वो जुड़े, तो किस प्रकार से उनका प्रचार हुआ, जुड़ा? तो उन्होंने कहा कि जब कोविड आया तो हमारे लिए पहला ये नया अनुभव था, किसी ने कोविड को पहले देखा नहीं था, तो हम सब जो अपने घरों में मंदिरों में बंद हो गए थे और बैठ के ज्यादा से ज्यादा जप करते थे, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ते थे, लेकिन फिर भी समय रहता था तो सोचने लगे क्या करें। और फिर उन्होंने सोचा चलो एक ऑनलाइन भगवद गीता क्लास करते हैं। उन्होंने सोचा थोड़े बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, लेकिन उस दिन 600 लोग जुड़े और उसके बाद कुछ हफ्तों में 5,000 हो गए, फिर 20,000 30,000 लोग हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो प्रचार का तो बहुत अच्छा आइडिया है। और कोविड खत्म होने के बाद में तो इन सब लोगों से कभी वो फिजिकली मिले नहीं थे, केवल कभी कभी कैमरे पे उनको देखा था, लेकिन जानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा एक वृंदावन की यात्रा करवाते हैं और देखते हैं कितने लोग आते हैं। और उसमें भी 1,000 से ज्यादा लोग जो है वो रजिस्टर किए। और प्रभु जी के हमारी टीम में 4-5 लोग थे, हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था कि हम उनको लेके जाए, लेकिन फिर वो साधन को डेवलप किया और समहाउ लेके गए। और प्रभु जी कह रहे थे कि धाम पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो धाम में अपनी शक्ति होती है, भगवान की लीलाएं वहां पे हुई है, भगवान ने अपने कदम वहां पर रखे हैं, और ऐसा सब जो उनके जीवन में उनके मन पे बहुत उसका असर पड़ता है। और एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं और 20 बार मैं वृंदावन गया रहूंगा, लेकिन मैं कभी जान नहीं पाया कि वृंदावन क्या है, जैसा प्रभु जी ने बताया। तो मैं कह रहा था कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। हाँ, और हम जो खाते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, हम जैसा संग लेते हैं हम पे वैसा ही भगवान का रंग चढ़ता है। तो इतना अच्छा जो है इस तरह से प्रभु जी ने ये बताया यात्रा की। एंड प्रभु जी, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, that in our flyer we saw that it was written that 500 साल पुराना मंदिर जो है आप अभी उसके केयर टेकर है, लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ये 500 साल पुराना मंदिर जो है ये कैसे हमारे पास, मतलब इस्कॉन के पास में आया, और अभी वहां पर क्या एक्टिविटी चल रही है? और हमने सुना है कि और भी ऐसे, केवल वह मंदिर नहीं, दूसरे भी कई ऐसे मंदिर है जो लोग आके कहते हैं कि आप इनको ले लो, करो, क्योंकि इनकी सेवा पूजा अच्छी तरह से नहीं चल रही है। तो एक तरह से ये जो spiritual, because जैसे मैंने कहा कि केरला is actually God's own country, and there are many temples. In that, the richest temple of not only India but the world is actually in Kerala, Anant Padmanabh, and huge deity, and it is actually the full of culture which is there in Kerala. Raja Mahabali, as we know, the story of Onam is also from Kerala. So what is the activity which ISKCON is actually doing, and we are supporting about the spiritual centers which are temples in Kerala? One beautiful thing about Kerala is the Kerala temples are very traditional, not like North India. There is a big difference of feeling in North Indian temples and South Indian temples. Kerala temples are full of stone architecture and wooden architectures, and the roof is made of copper sheet, and they maintain it very clean. Beautiful temples in Kerala. But at the same time, many of the temples are under the custody of family lineage. But somehow the generations grow, they all go out of Kerala, work all over the world, they never come back. And there are many such temples in Kerala which there is no one to take care of. So some people give it back to the government, some people don't want to give it to the government. So we got one such temple in a town called Tiruvalla, where actually baby Krishna came and killed a demon thousands of years back. A Leela has happened in that place. There's a beautiful temple made of copper roof and wooden structure with a pond, and it's a very beautiful temple. So when we went there to took over the temple was in a little bad shape, and the family didn't had money to renovate the temple. So we went ahead, we said we renovate, and they gifted the temple to ISKCON.
And there are many such temples in Kerala, and I am sure these kind of things will be in other states also. So it is our duty to protect what we have, because already in history we have lost so many things. For example, I'll tell you one small example. In Konark, the Surya Dev temple had a magnetic floating roof which was destroyed by the invaders. So every temple has got its own culture, its own history and all. So it's our duty to protect as much as possible. So we are extending our help in Kerala to find these dilapidated temples and all, and try to renovate as much as possible. That is also one of our projects which is going on. Wonderful, wonderful, Prabhuji. So it's actually so nice to hear about so many activity which is being, done in the society. Not only, giving the knowledge of Bhagavad Gita, or distribution of Bhagavad Gita, but also distribution of prasadam, distribution of medical equipment, distribution of so many things related to body, mind, and soul, and also to the spiritual center, as you very very rightly said that these temples are very gorgeous temple, very important, some having wooden structure. और ये जो प्रभु जी हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत मंदिर हैं हमारे, जिनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और ये फैमिली, परिवार के पास में केरला में ऐसे ऐसे मंदिर है, लेकिन परिवार के लोग जब पढ़ने लगते हैं, केरला से बाहर चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, वापस आते, तो इनको ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। तो ऐसा ही एक मंदिर जो है तिरुवल्ला में प्रभु जी को वहां पे दिया गया, जहां पर ऐसे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वहां पर लीला हुई, जहां पर छोटे से शिशु के रूप में, छोटे से बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसमें तांबे की परत और वगैरह लगी हुई है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमारा ये फर्ज है, हमारा ये कर्तव्य है कि हमको हमारे संस्कृति का, हमारी धरोहर का जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोणार्क में इस प्रकार का मंदिर था कि जिसमें बताते हैं कि मैग्नेटिक रूफ था वो सब, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस प्रकार से एक और मिशन ये जो कार्य कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी मंदिर है जो कि जीर्ण अवस्था में है, तो उनका जीर्णोद्धार करने का भी प्रयास हो रहा है, और बहुत सारा इस प्रकार से प्रयास करते हैं। सो प्रभु जी, सो हैप्पी टू नो अबाउट ऑल दिस डिफरेंट गैमेट ऑफ एक्टिविटी विच इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम वन सेंटर of ISKCON in Kerala. So I have also heard, Prabhuji, that after COVID, you actually meaning also helped in sanitizing the whole school. What was that story? If you can just let us know. Yes, we all know about Corona. It started for a few months, but especially schools were closed for a longer period. And the schools were used as the, what you say, patients, kind of shelter and things like that. So one of our friend who was working in the ministry, he said now the government is going to reopen the school, but the government is worried about sanitizing the school. So the Atma Plus unit of ISKCON, Trivandrum, we came forward and told the government, we will sanitize all the government schools in Trivandrum district. So we took over a district and sanitized nearly almost like 100 school, all the government schools, the classrooms, the furniture, the labs, the toilets, including their school buses, everything. So we sanitized, and that was a great help for the government to reopen the school, and the government also started appreciating. थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि एक पूरी स्कूल को सैनिटाइज किया गया कोविड के बाद में, क्योंकि स्कूल में ही कई बार हॉस्पिटल्स टेम्परेरी बना दिए गए थे, क्योंकि कोविड की ऐसी सुविधा थी। तो गवर्नमेंट को थोड़ी चिंता थी कि बच्चों पे कोई असर ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवाणु रह जाए। तो पूरी की पूरी स्कूल का जो है वो गवर्नमेंट से बात करके और उन्होंने सैनिटाइज किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड दैट you have a very good friendship with the government authorities in Kerala, also with the police and all, so that they are actually allowing us to do such kind of social activity also. So thank you for that. And now I come back to our core activity of ISKCON, which is basically preaching. Preaching is the essence, as Srila Prabhupada says. So what kind of preaching activities is currently going on in that area, Prabhuji, where you are involved, or your team of devotees in ISKCON Trivandrum are involved? You can please just tell us, our audience, on that. So we
we preach in 3 districts in South Kerala, 3 to 4 districts, 3 districts. So all our devotees who are well versed in Bhagavad Gita, Bhagavad and all. So we have Sunday programs. We have nearly 32 centers. So in all these places, they do Sunday programs. And some of the Mataji's ladies, they go and teach the children, school children. They have Sunday school for the children. And the brahmacharis, they go out for book distribution and preaching. And the preachers, they go on weekends. They are also regular people who are working in offices and things like that, but weekends. So somehow we connect around 1,000 plus people physically in every weekend, and many of them take up bhakti, become vegetarian and things like that. And this coming year we have a project. This summer we are going to start a Bhakti Vedanta Sunday school. So we will be starting around 100 Sunday school students, for students between age of 12 to 16 on Sundays. Wow. Every other day they go to the regular school. So Sunday half a day in 100 different locations. We will have schools, and each school will have 20, 30, 40 students. And it's like we have made a syllabus for the whole year, because that is the right time. Like Prahlad said, give it at the young age. So we are planning for that big project also this coming year. Very nice, Roji. Wonderful. So at this time, let me just make one announcement for our audience that we will also take your questions, which you can ask Prabhuji, because I've been asking so many questions to him. Prabhuji is a very knowledgeable person. So please, you can type your questions and our team will display the question in front of Prabhuji where he can answer. So let me very quickly summarize what Prabhu said about this school, project. So basically, प्रभु जी बता रहे थे कि इनकी जो प्रचार, मैंने पूछा था कि प्रचार ही सार है, ये हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस दुनिया में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन प्रेम और ज्ञान जो है केवल वही नदारद है, वही हमारे को नहीं मिलता है. तो प्रेम और ज्ञान जो है, भगवान का प्रेम भक्त जो है ज्ञान के माध्यम से जो है वो दे सकता है. तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी प्रभु जी ने बताया कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट है केरला की जहां पर ये एक्टिविटी करते हैं, जहां पर संडे प्रोग्राम चलते हैं, जहां पे बहुत सारे 30 से 32 कुछ प्रोग्राम होते हैं, और ये वीकेंड पे प्रोग्राम होते हैं जिसमें इनकी टीम ऑफ डिवोटीज, जिसमें ब्रह्मचारी भी है, कुछ गृहस्थ भी है जो प्रोफेशनल से काम करते हैं, वो वीकेंड पे आके क्लास लेते हैं. कुछ माताजीज है, वो माताजीज की क्लास लेती है, बच्चों की क्लास लेती है. और अभी अगले वर्ष से एक बहुत अच्छा भक्ति वेदांत स्कूल जो है, संडे स्कूल, वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें 100 या 100 से ज्यादा जो है वो बच्चे आएंगे जिनकी उम्र 12 से 16 वर्ष है, जो कि बहुत ही नाजुक उम्र कही जाती है, और कहते हैं कि पैर फिसलने का इसमें बहुत चांस रहता है. तो बाकी दिन वे बाहर पढ़ाई करते हैं, और अभी जो है उनको ये स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि प्रहलाद भी कहते हैं कि ज्ञान जो है वो बचपन से ही देना चाहिए. तो ये कार्य किया जा रहा है. तो मैं अभी एक और अनाउंसमेंट कर रहा था कि प्रभु जी जो है वो हमारे अपने आप सबके जो है प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर भी देंगे आपको. तो मैं चाहता हूं कि आप अपने चैट पे जो है उसको टाइप कीजिए. एंड और जो प्रभु जी इतनी जो ये प्रयास कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे जुड़ने के लिए जो भी आप वहां पे सेंटर में है वो प्रभु जी से जुड़ सकते हैं. तो ऑल आवर ऑडियंस हु आर फ्रॉम केरला हु इज वाचिंग अस, you can also get connected to Prabhu's and Prabhu's team for that. So Prabhuji, before we take audience question, just would like to ask one question, very general question, which may benefit our audience, that why one should actually do bhakti. Because sometimes in different stages of our life we have different goals. When somebody is a student, his or her goal is only to pass an exam and just score good mark. And then somebody just want to kind of have good job, settle in life and all those things. But in this all endeavor, probably it reminds me of one thing where one teacher asked student that what you want to become. Somebody said doctor, chartered accountant and all those things, and one student said I want to be happy. So how this happiness can actually come in somebody's life, and if somebody who really accepts Krishna consciousness or bhakti in general, so will he be happy, and why should we accept this path, spiritual life? This is my last question before we take audience question, Prabhuji. So Rameshji, you have already given the answer. See, at the end of the day, everybody wants to be happy. A businessman,
a philanthropist, a professional, they all want to be happy. And generally, people find that security and happiness in family. But somehow in Kali Yuga, that is also incomplete because many people are very dissatisfied. Whether they earn money, that is the honest thing. We all want to be satisfied. We all want to be happy. Let us forget the term bhakti because somehow the word bhakti has given a different idea to us. But generally, I want to be satisfied at the end of the day, whatever I do. That will come only from the mind, heart, and soul, from inner self. That is where it comes from. And that will be developed and nurtured by doing some spiritual activity. So we just introduce that program for them and they will start doing that activity. Then they feel very satisfied. I had a friend who was working in Baba Atomic Research Institute in Mumbai. He once showed me the data. In the last 25 years in Baba Atomic Research Institute, 12 scientists committed suicide. And these scientists are like doctorate, double doctorate, triple doctorate, the most intelligent men in the whole of India. They had wealth, they had good reputation, family, recognition, everything. And at the end, many of them committed suicide. You can check this in Wikipedia. Many scientists committed suicide. Somewhere we all have a personal space within our heart. Unless that is not touched and unless that is not filled, unless that is not satisfied, whatever we do externally is incomplete. And trying to fill that space is called bhakti. So everybody should ask this question about themselves and get an answer. Otherwise, his whole life will become a question mark. You know, like Prabhupada many times used to say, it is like driving a car, but doesn't know where to go. Keep on driving again and again. You know? Yeah. Yeah. Thank you, Prabhuji. Thank you very much, for giving this wonderful answer that ultimately everyone is actually, looking for happiness and that happiness will come from within. So just one more question, Prabhuji, just which is an extension of the same question, that how practical is Bhagavad Gita for, like, we have different, because not everybody is actually, like you wearing the saffron, being a brahmachari, staying in the temple, where you have temple atmosphere. We are all struggling. And if you see, in India as well as outside India, I have seen, even in my professional life, that most of the people, they are actually struggling. There is a hard struggle even to survive, and there is a tremendous stress. There is, like, deadlines, and there are like so much of work people are actually doing. Even in the student life, there is so much of stress. Even, like in the professional life, there is so much of stress. And earlier people used to go to work from, say, 9 to 4, 9 to 5. They would come, they would have a lot of time, maybe sometimes in between they had some time. But now people go to work sometime at 7 o'clock in the morning and come at 11 o'clock, and they don't have time. So in this way, how can actually they take shelter of the spiritual knowledge, Bhagavad Gita, and how Bhagavad Gita is actually practicable for them? How Bhagavad Gita can be practically applied in this scenario, Prabhuji? So your question is very, very apt, Prabhu, because the same situation Arjuna was also. He was in a pressure. He had relatives to kill. I don't think that is an easy job, holding a knife and you're going to kill your uncle and brothers and things like that. It was a tremendous pressure and he didn't want kingdom. So similar situation, but a different story. But Bhagavad Gita says you just spend time, you leave the spiritual part of it. Everybody who's going to work is under a pressure, target, deadline, all these things. By simply spending half an hour every day to the principles of Bhagavad Gita, if you are able to perform better in your office, earn better, work better, why someone will say no? Anybody will take it up because this will make your life easier.
The only thing is you have to find time. There is a Chinese proverb which says, wherever you are investing your time, that is very important to you. You know, if you spend time in a hotel, that means he's very interested in eating. Somebody spends time somewhere, you know, that place where you spend your time is very dear to your heart. So only thing is we have to find little time, and the principles are very simple. Daily do japa, you know, God's names for few minutes. Read Bhagavad Gita and try to implement little principle. Don't get angry, try to control anger, be good to us, small things which we can try to practice. And it is not like a Herculean task. Anybody can become a Gita Pandit. There is no doubt about it. Thank you so much, Prabhuji. As you are saying, it looks so easy, as you know, as you said, that only thing is that half an hour if we can take out. And also I've heard that even big celebrities, sometimes they say that you are doing so much, you take out half an hour for your body. So we are saying that take out half an hour for your soul. it is same principle. So now, Prabhuji, we will take our audience question, but I'll just quickly summarize. तो मैंने प्रभुजी से प्रश्न पूछा था कि कैसे जीवन में लोग जो है भगवद गीता को अपना सकते हैं, क्योंकि अभी जो परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, चाहे अगर विद्यार्थी है तो उसको पढ़ाई की बहुत चिंता है और बहुत सारा उस पर प्रेशर है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, डेडलाइन मीट करनी पड़ती है, और सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसे परिवेश में भगवद गीता का कैसे आश्रय ले सकता है, या कैसे प्रैक्टिकली भगवद गीता का हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संतोष। अगर हमारे जीवन में अगर हम सेटिस्फाइड है तो हम बहुत कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज हम केवल भागते रहते हैं। और एक प्रभु जी ने एक डेटा बताया कि BARC के अंदर उनका कोई फ्रेंड था, उन्होंने कहा कि 25 साल का रिसर्च ये बताता है कि वहां पर 12 से ज्यादा कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और वो बड़े बड़े डॉक्टरेट थे, डबल डॉक्टर, ट्रिपल डॉक्टर ऐसे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में खोखलापन था, क्योंकि बहुत सारा भौतिक जो संपदा उनके पास में थी, लेकिन फिर भी अंदर से मन खाली था। तो प्रभु जी कहते हैं कि जैसे कोई कार चला रहा है लेकिन उसे पता नहीं जाना कहाँ है, तो सबसे पहले तो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य जो है मनुष्य जीवन का, उसको पता लगाना है, और उसके बाद में थोड़ा सा समय निकाल कर अगर हम हमारे आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें प्रभु जी ने बताई, वो अगर हम करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है ये समय। तो जैसे चाइनीज कहावत उन्होंने कही कि जो व्यक्ति जहां पर समय लगाता है वो उसे बहुत प्रिय होता है। जैसे कोई ज्यादातर होटल में जाता है तो उसे खाना बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से यदि हमें शांति, हमें सुख और हमें प्रसन्नता अपने जीवन में चाहिए तो हमें थोड़ा सा समय तो निकालना ही पड़ेगा ताकि हम भगवद गीता को अप्लाई करें। और उन्होंने कहा कि वो सिचुएशन में अर्जुन भी था जिस सिचुएशन में भी हम है, केवल परिवेश अलग है, वो उसके पास भी बहुत प्रेशर था, रिलेटिव थे जिनको वो मारने वाला था, वैसी सिचुएशन तो हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस समय कर पाया तो हम भी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का। और अभी आपके जो प्रश्न है हम प्रभु जी के समक्ष रखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आपके प्रश्न का वो उत्तर देवे। Thank you so much, Prabhuji. We will take the audience questions now, which we has come. So first question we get is from Vishal Hiranandani, who is asking, Hare Krishna, what's the correct approach for depression facing individual to enter into bhakti? It's difficult to have realization in such a case, so please guide. Yeah, depression is related to mind. अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, so they give physical treatment which is not 100% helpful. Depression is very closely related to mind. So if somebody can sit peacefully for few minutes, then he will be able to cure himself. So he should lift his mind from that situation which created a problem. The situation which created the problem cannot itself solve the problem. You need to come out. ऐसे है, somebody is inside the well. He is not able to come out. So they need a helping hand. So they should take a helping hand of a person who has got a stronger mind. So that stronger mind person can guide you. And if he is a practicing Bhagavad Gita, that the person who is going to help you, that will be double help. Who is practicing Bhagavad Gita, he can give you the right help and lift your mind from depression. And first step, very simple step I can tell you is spend 10-15 minutes
do the japa. That is a basic thing which can help you. Oh, very nice. Oh, wonderful. What an example you gave actually, you know. So विशाल जी ने प्रश्न पूछा था, उनके प्रश्न का प्रभु जी उत्तर दे रहे थे कि डिप्रेशन के बारे में उन्होंने पूछा था। तो प्रभु जी कहते हैं कि डिप्रेशन जो है वो मन से रिलेटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस मन को उस सिचुएशन से ऊपर लेके आना है। तो जिस परिस्थिति ने वह चुनौती खड़ी की है, वह परिस्थिति उसको सॉल्व नहीं कर सकती, उसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया कि अगर कुएं में कोई गिर गया है तो वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता, तो बाहर खड़ा व्यक्ति वो रस्सी डाल के कुएं से किसी को निकाल सकता है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके पास डबल शक्ति होती है, तो वो रोप डाल के भी निकाल सकता है और उसके मन का भी जो है वो ट्रीटमेंट कर सकता है आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। तो प्रभु जी ने कहा कि सबसे अच्छा कार्य है, अगर डिप्रेशन से बाहर आना है तो रोज कम से कम 10 से 15 मिनट जप है, आप भगवान का नाम लीजिए और जप कीजिए, आप निश्चित रूप से अपने मन को शांत कर पाएंगे और डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। सो वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मुखिया अंजी, शी इज आस्किंग, हरे कृष्णा प्रभु जी कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका उद्धार हो जाता है, तो क्या अगर एनिमल भी आज के दिन प्राण त्याग देता है तो उसका उद्धार होता है कि नहीं? आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रभु जी, यू नो, बिकॉज शी इज आस्किंग एकादशी, इफ समबडी डाइज he gets liberated, so if an animal dies also will he get liberated? Yeah. So these codes are called marketing codes. If you take any chapter of Bhagavad ka koi adhyay, if you take any chapter, at the end of the chapter it will be written, if you study this chapter very well, you will have a victory, you will have wealth, you will have everything. And inside the chapter it will be written, too much of wealth is also maya. So this thing is contradicting. So Ekadashi ka marketing formula hai, anybody who dies in Ekadashi will attain God's planet. That doesn't mean a murderer who dies in Ekadashi on an accident will also happen. So this quote will be supported by the purity of consciousness. If he is a devotee who is chanting God's name, also following Ekadashi, if he dies, definitely he will go back to God's planet. Yeah, very nice. Thank you for clarifying प्रभु जी। तो आपका जो प्रश्न पूछा कि एकादशी में यदि कोई मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो क्या जानवर का भी उद्धार होगा अगर एकादशी को मरा है? तो प्रभु जी कहते हैं कि ये सब जो है शास्त्रों में एक प्रकार से मार्केटिंग टेक्निक जो है वो बताई गई है, और ये कहने के लिए ताकि व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बन सके कि इसे एकादशी करने पे उसका क्या फल प्राप्त होता है। जैसे भागवत में कहा गया है कि हर अध्याय के बाद कुछ फलश्रुति दी गई है कि आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई सच में खराब व्यक्ति है या कोई कातिल है, मर्डरर है और वो किसी को मार रहा है या वो अगर एक्सीडेंट में मर गया है तो उसका मोक्ष उस बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि जैसे उसने बहुत पवित्रता के साथ अपना जीवन यापन किया है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी कार्य करती है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं अपने दर्शकों का। राधिका संतोष जी पूछती है, व्हाई डिसकंटिन्यूटी कम्स इन भक्ति? ओ वेरी नाइस क्वेश्चन। So this is called sadhana. Sadhana means we do the same thing at the same time. In Upanishad there is a question. There was a woodcutter. He was chopping woods. First day he cut 5 trees. Second day he cut 6 trees. Slowly he became expert and he started cutting 10 trees, 20 trees. After some time, the number fell down, 20 to 10, 8, he started going down. So what happened? He forgotten to sharpen his axe. In the same way, sadhana means doing same thing at the same time. That gives the strength. For example, you go to doctor. Doctor prescribes you pills morning before breakfast, at lunch, and after dinner. You have to take 3 pills, 1 each. But the whole day you forgot to take pills. And in the night you take all the 3 pills together. Will that help you? No.
So sadhana means doing right things at the right time. In bhakti, not only in bhakti, even our normal things. If there is no regulation, then there is no success. So we have to make ourselves regular and disciplined. Thank you, Prabhuji. Such a wonderful point you said that no regulation, no success. It is very very important point. तो प्रभु जी बता रहे थे कि किसी राधिका जी ने पूछा कि अगर भक्ति में क्यों जो है वो डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है, तो प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया कि उपनिषद में कहा गया कि लकड़हारा जो है वो पहले एक वृक्ष काटता था, फिर ऐसे ऐसे करते करते 10-20 काटने लगा, लेकिन फिर और कम हो गए क्योंकि वो अपना जो कुल्हाड़ी था उसको धार करना भूल गया। तो इसके लिए हमारे जीवन में हमको हमारे कुल्हाड़ी को धार भी करना है और सही समय पर सही वस्तुएं करनी है, केवल आध्यात्म में नहीं, हर जगह पे। तो हम जब धीरे धीरे इस प्रकार से स्टेप करते हैं और एक डिसिप्लिन वे में, एक मतलब ऐसा कहते हैं कि निश्चित रूप से रेगुलेशन करते हुए अगर हम करेंगे नियमों में, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम और अगला प्रश्न लेते हैं एनक्यू से। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो बड़ा डाले भक्ति में मीट दे जबरदस्ती और पाखंड बोले हमें, क्या उसको दंड लगेगा? ओके, सो आई थिंक ही इज आस्किंग दैट जो भक्ति में बाधा डालते हैं हमारे, या जो हमको जबरदस्ती मांस खिलाने की कोशिश करते हैं, या हमको पाखंडी कहते हैं, सो नो विल दे बी पनिश्ड बाय लॉर्ड और बाय नेचर? True, definitely, because that is a sinful activity. 6 people will get sin. The man who sells the flesh, the man who cooks, the man who distributes, the man who eats, the man who witnesses without protesting, all the 6 of them, right from the seller to the eater, everybody gets sin. Because even in India, some 70-80% 80 years back, the percentage of meat eaters were less than 10%. Now in India, almost like more than 80% of the people eat meat. Eating meat is sin, proved scientifically, religiously, even materially by doctors. So eating meat is also sin. Distributing and forcing somebody is also sin, and that will be punished by God and by nature, and there is no doubt about it. And not only in Hindu Shastra, this is explained in even other religious Shastras also. तो प्रभु जी ने बताया कि जैसे पाप कार्य होते हैं जिसमें मांस भक्षण भी जो एक कार्य है, तो कहते हैं कि 6 प्रकार के व्यक्ति है कि जो जैसे पशु को काटता है, जो उसे बेचता है, जो उसे पकाता है, जो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसे खाता है, जो उसे देखता है, ये सब होते हुए, और ये सब जो लोग हैं ये सब पाप के भागी बनते हैं। तो शास्त्रों में ये बात कही गई है। और पहले देखते हैं कि हम इस संसार में, भारत में जो है पर्टिकुलरली 70-80 साल पहले 10% से कम लोग थे जो मांस भक्षी थे, लेकिन अभी 80% से ज्यादा लोग हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाप कार्य बढ़ रहा है, और जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, हम जानते हैं कि भगवान आते हैं, तो उस प्रकार से डेफिनेटली उसको सजा मिलेगी, पनिश होगा। पाप कार्य का कोई दूसरा उपाय नहीं है, सजा भुगतनी हमको पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारा दूसरा प्रश्न लेते हैं जो प्रभु जी के लिए आ रहा है। मुरलीधर कृष्ण प्रभु जी पूछते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डू यू हैव ए प्लान एक्सपांड दिस स्कूल इन नेबरिंग स्टेट लाइक कर्नाटका? तो प्रभु जी ने जो स्कूल के बारे में बताया है, सो वन पर्सन इज आस्किंग ए क्वेश्चन दैट विल यू expand this school in the neighboring states? Okay, right now we have manpower only to do in some portion of Kerala, but if somebody is willing to implement the same idea in Karnataka, we will do all the help for them so that they can also implement that in Karnataka. Thank you. So it is like a franchisee. प्रभु is saying कि हम आपको knowledge, know how और वो सब देंगे। तो क्योंकि देखो, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत छोटे परसेंटेज के लोग जो है, जो फुल टाइम भक्ति के अंदर है, जो अपना इतना दे पाते हैं। सो प्रभु जी ने बताया कि यस,
ये कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में इतनी सुविधा नहीं है। तो कोई दूसरे भक्त, तो यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस से भी निवेदन करना चाहूंगा, दर्शकों से और सबसे, कि आप भी अपने हिसाब से जो कुछ भी छोटी मोटी सेवा कर सके भगवान के लिए, चाहे वो तन मन धन किसी से भी, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को हायर भी कर सकते हैं लेकिन धन नहीं होता है हमारे पास में। तो यदि आप फिजिकली सेवा नहीं कर सकते तो आप धन दे सकते हैं, अगर आप धन नहीं दे सकते आप फिजिकली सेवा कर सकते हैं, और अगर दोनों नहीं कर सकते तो अपने मन से प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं हमारे लिए, कि हमारे ये जो प्रयास है हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़े। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। उषा कुमारी जी पूछ रही है, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता क्लासेस ड्यूरिंग कोविड टाइम। थैंक यू सो मच उषा जी। इट्स अ कमेंट फॉर यू प्रभु जी, इफ यू वांट टू से समथिंग। Thank you so much. Please continue practicing all the principles of Gita. Thank you. Let us go to the next question if we have any. Vishnu Chadda ji is asking, Prabhuji, what happens when a person dies listening to Hare Krishna mantra, though he is not a devotee? So if he is able to listen to Hare Krishna Mahamantra at the time of death, definitely Krishna will make him devotee and take care of him. There is no doubt about it. Because holy name, whether consciously chanted or chanted by mistake or even heard by ears, however, the holy name will bless him and definitely Krishna will protect him. There is no doubt about it. तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण सुनते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाए और वो भक्त भी नहीं है तो उसका क्या होगा। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि निश्चित रूप से वो भगवान को प्राप्त करेगा, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है और भगवान ऐसे बताते हैं कि पवित्र नाम जो है वो अगर मरते समय किसी ने लिया है तो जरूर भगवान को प्राप्त करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जानबूझ के, अगर गलती से भी उसने लिया है, अचेतन भाव में भी लिया है या केवल सुन लिया है, तो हरिनाम में बहुत शक्ति है, वो उसे बहुत जल्द ही अपने पास में बुलाएगा और पवित्र करेगा। हरे कृष्णा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्बू जी इज आस्किंग, प्रभु जी अगर कोई एकादशी रखे हो और बीमार हो जाए तो दवाई लेना चाहिए क्या? सो ही इज आस्किंग इफ somebody is on ekadashi fast but can medicine be taken? Yes, medicine can be taken. There is no doubt about it. Rupa Goswami has written in Bhakti Rasamrita Sindhu, if somebody is sick, medicine can be taken, because medicine and all these things will not fall under the category of fasting. It can be taken. तो प्रभु जी ने प्रमाण भी दे दिया और कहा कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये बात लिखते हैं, तो बहुत ऑथराइज्ड है। यस, अगर कोई बीमार है तो दवाई ली जा सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुब्रानील आचार्य जी पूछते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैन यू टेल हाउ टू गिव महामंत्र प्रेयर टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन पूजा रिचुअल्स? Question is not clear. How to give, meaning how to pray to supreme personality when we are doing, I think maybe puja rituals, karma kand. I'm not sure what he is about to ask. So anyway, during puja rituals, we will be chanting some prayers. If you don't know specific mantra and all, Hare Krishna Mahamantra is the complete solution. You know, in puja in detail, they have mantra for each and everything. But Hare Krishna mantra, if you chant, that is more than enough. It will cover everything. It is Mahamantra. थैंक यू। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको महामंत्र कहा जाता है, ये कलयुग के लिए है। और पूजा अर्चना में बहुत सारे विधि विधान होते हैं, तो अगर हमें विधि विधान का पालन नहीं भी करने आता है तो केवल हरे कृष्ण का जप करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही सफिशिएंट है। थैंक यू प्रभु जी। सो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर Are there more questions? Yes, we have. हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री राधे इज आस्किंग, शुद्ध भक्ति कैसे करे, खुद से फैमिली का सपोर्ट नहीं करती है। So he's saying that family is not supporting. I want to do pure devotional service. How can I do? So Shuddha Bhakti is connected between
God and yourself. The situation, the family, all these things are external. When family members also become devotees and appreciate, it will be very nice. If people are not appreciating, doesn't mean we also react to them and strain the relationship. As far as possible, a devotee should protect the relationship with family, friends, and everything. Bhakti is very, very personal. Krishna is living in everybody's heart. You simply offer pure prayers. Krishna will make situations in such a way that your bhakti will become pure. There is no doubt about it. वाह, बहुत ही आशावादी उत्तर है ये, बहुत अच्छा प्रभु जी, यू एक्चुअली रिप्लाइड. सो पूछा कि शुद्ध भक्ति मैं कैसे कर सकूं अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, खुद से कैसे की जा सकती है. जय श्री राधे जी ने पूछा तो प्रभु जी ने बताया कि शुद्ध भक्ति जो है वो हमारे और भगवान के बीच में बहुत ही पर्सनल है. तो उसमें अगर कोई हमारा परिवार भक्त है और हमारा साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं देता है तो हमको खुद को भगवान के लिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं. और ये बहुत ही एक निजी संबंध है हमारा भगवान के साथ में, जो हमारे हृदय में आसित है. तो इसके लिए अगर हम भगवान से भक्ति करेंगे, अगर हमारा वातावरण अगर हमारे अनुकूल होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें आप अपने भक्ति में लगाइए, और भगवान जरूर सहायता करेंगे. थैंक यू सो मच प्रभु जी. सो अभी जैसे हमारा टाइम बीतते जा रहा है, वी आर अबाउट टू एंड. देयर आर मेनी क्वेश्चंस बट वी विल टेक 2 क्वेश्चंस probably before we conclude. Thank you for your time Prabhu ji. So Kanhaiya Desh Braj Mandal Yatra is asking question. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu ji. Dakshin Kannada Karnataka state is famous for Bhoot Aradhana. It is difficult to preach Krishna consciousness for followers of this tradition. Please guide. So somebody seeking your expertise Prabhu ji in this way, that sometimes it is very difficult to preach in one particular part. What we can do. So this kind of trend is there all over the world. Some places people are worshipping Bhuta Preta. Some places people are worshipping and fanatic about movie stars and sports stars. In some places people worship Saturn. In Christianity, people worship Saturn. All these are all there everywhere. Bhagavad says, as people are going more and more in tamas, people will be doing this mistake. So our Prabhupada ji ne dikhaya hai, first step in these places, we should simply give prasadam, Krishna prasadam. Simply distribute Krishna prasadam daily. Then after some time, they will be pure enough to hear our philosophy. So when we go to these kind of places where people are very, very in tamasic belief and faith, we distribute prasadam as much as possible. Thank you so much. तो प्रश्न पूछा गया कि ये कर्नाटका स्टेट के इस कोई कन्नड़ा जगह में जो है वहां पे भूत की आराधना वगैरह की जाती है, तो ऐसे लोगों को कैसे भगवान या भक्ति के बारे में बताए. तो प्रभु जी कहते हैं कि ये केवल उस स्थान की बात नहीं है, दुनिया भर के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थान है जहां पर भूत प्रेतों की पूजा आराधना की जाती है. इवन दूसरे धर्मों में भी, जैसे सैटन उन्होंने बताया क्रिश्चियनिटी में वगैरह होता है. तो जितना लोग तमस में जाते हैं, तमोगुण में जाते हैं, तो इस प्रकार से अधोगुणी जो तपस्या है वो करने लगते हैं या आराधना करने लगते हैं. तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे पहले आप उनको प्रसाद दीजिए, क्योंकि जब प्रसाद उनके अंदर जाएगा तब उनका मन और उनका शरीर जो है वो शुद्ध होगा, तब वो हमारी बातें सुन सकते हैं. तो जब प्रसाद खा के उनका अस्तित्व जो शुद्ध हो, तब उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए, तब वो सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसके पीछे जो है वो कार्य करना शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच प्रभु जी. So we will take one last question. We just have 2 minutes for our show to conclude. So Deepak के पटेल पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा श्लोक कैसे याद करें? How to remember shloka? What is the technique to memorize shloka? Yeah. We remember so many film songs, 40 साल पहले जो अमिताभ बच्चन का song, we still remember, Just interest is the seed for remembering. We don't write Amitabh Bachchan songs 100 times to remember or something. It just comes.
So in the same way, shloka also you practice every day. You use it in preaching. You use it while discussing with people. Tell it to friends. Within, you see, 4 times, 5 times, you will automatically remember the shloka. Wow. Wonderful, Roji. Wonderful and very nice example. And it is true. Indeed, I have also experienced this, that, I don't, meaning write down, but still, remember film song of maybe 40 years, as you rightly said. So it is interest. Interest is the seed. प्रभु जी बता रहे हैं कि जो हमारा, जहां पर हमारा मन, हमारा चित्त है, हमारा इंटरेस्ट है, वो हम अपने आप याद कर लेते हैं. तो टेक्निक ये है कि आप श्लोक को पढ़ो, बार बार दूसरों को बताओ, तो 4-5 बार करेंगे तो हमको याद हो जाएगा. So thank you so much, Prabhu ji. We are very, very elated, honored, and happy to have you on the show. And you have actually very patiently, very nicely, although I have been also translating and, meaning just taking out your time, in Hindi, but very, very patiently you are sitting and listening and also, observing and telling. So if there was any mistake on my part, in translation or anything, I just ask forgiveness from you also and from our audience also. But before we conclude, Prabhu, we would like that it is actually our honor and honor of our audience also to have you. So just, in summary, whatever message you want to give to our audience, we would request you, please, speak out your heart, give your message so that our audience can take it and make their life very, very satisfied and happy. Thank you so much, Ms. Ramesh ji and Hare Krishna Television and all the audience. This world is full of differences. Rich people, poor people, educated people, illiterate people, healthy, unhealthy. This world is full of differences. So if God has blessed us with something extra which others don't have, we have money than others, we have time than others, we have good health, we are intelligent than others, you have anything which is little extra than others, don't be proud about it. Try to use that in the person's service. In this world, in this way, the world will become very peaceful. Like, I know a little bit of Bhagavad Gita, which many don't know, so I try to give them. In this way, you may also have something which others don't have. Don't be proud about it. Use it in the service and pray to God, and there will be a peaceful world. Thank you. Thank you so much, Prabhuji. Thank you for your time. And I know you are very busy. I'm honestly telling, because it is actually in Kerala, a very big festivities going on. And there was Janmashtami, Radha Ashtami, and many Nandotsav and many programs. Still, you have given your valuable time to us, and we are truly grateful for that. And we hope and we pray that we may have you more on our shows. I know there are many different platforms where we can connect with you, and the audience can also get connected with you. So once again, expressing our heartfelt gratitude to you. Thank you for connecting with us. Hare Krishna. Thank you so much for the opportunity, and it's my honor. Hare Krishna. हरे कृष्ण. तो दर्शकों, हमने देखा कि प्रभु जी ने कितना अच्छी तरह से अपने पूरे जीवन के बारे में हमको बताया, और बहुत सारे प्रश्न हमने उनसे पूछे, ऑडियंस के भी हमने प्रश्न लिए थोड़े बहुत. और प्रभु जी से जो मैंने आखिरी संदेश जो कहने के लिए कहा, उसके पहले मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जो हमारी स्क्रीन पे है, कि आप अगर तनाव और चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 15 सितंबर अर्थात कल शाम 7 बजे होने वाले निशुल्क वेबिनार में भाग लें. संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर पर 9047211711. तो कल एक बहुत ही अच्छा सेमिनार होने वाला है जो हमारे को अपने जीवन में बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता है. तो हम निवेदन करेंगे कि आप उनसे जुड़े. और प्रभु जी ने जो अपना संदेश हम सबके लिए छोड़ा, बताया है, तो उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया जो है, ये उन्होंने कहा इट्स फुल ऑफ डिफरेंस. मतलब बहुत सारी जो है इसके अंदर है, अलग अलग तरह से द्वंद्व है. जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई स्वस्थ है, कोई निरोगी है, कोई रोगी है. इस तरह से बहुत कुछ है. लेकिन अगर भगवान ने हमें कुछ भी दिया है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. और उसमें हमें गर्व करने की या झूठा गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर हम हमारी तरफ से हमारा अपना प्रयास करें, जो क्योंकि भगवान ने हर किसी को कोई न कोई एबिलिटी, कोई न कोई योग्यता जो है वो दे रखी है.
तो उसे हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो हमें भगवान की सेवा में अगर हम लगाएंगे तो ये संसार जो है वसुदेव कुटुंबकम, जैसे प्रभु जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा ये स्थान हो जाएगा और इसमें जीने लायक होगा और हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में सुखी और संतोषी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हम चाहते हैं कि हरे कृष्णा टीवी का ये जो एक प्रयास है, ये कदम है, ये आप दूसरों को भी बताएं। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स में बताएं, इसको सुनिए, दूसरों को सुनाएं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हर किसी को बताएं, महामंत्र के बारे में बताएं। हम भगवद गीता भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पोस्ट से अगर आप कहीं भी भारत के कोने में है तो हम आपको पहुंचा सकते हैं। और हमारा दूसरा एक काउंसलिंग इनिशिएटिव है जिसके अंदर अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो भी आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा प्रयास जो है इस संसार को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा है और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इस प्रयास में हमारा साथ देंगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ में आपसे विदा लेंगे और फिर अगली कड़ी में आपसे जुड़ेंगे, एक नए कड़ी में, एक नए धारावाहिक में, एक नए भक्त के साथ में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।